हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम्स के लिए जिस इंग्लिश सेक्शन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन हु loves books, bibliophile, a person who is new to a profession or activity, novice a neophyte, one who believes that God does not exist, atheist, one who believes all religions are equal, ecumenist, one who eat both plant and animal food, omnivorous, a person who collects stamps, philatelist, one who is all powerful, omnipotent, one who is present everywhere, omnipresent, one who knows everything, omniscient, one who pretend to be what he is not, hypocrite. बात करते हैं वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट, वन हु हेट्स women, misogynist, वन हु हेट्स men, misandrist, one who hates mankind, misanthrope, one who writes for another who publish it under own name, ghost writer. अब बात करें फोबिया मैनियास की, तो देखते हैं एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, एबनॉर्मल एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया, एबनॉर्मल फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया, एबनॉर्मल फियर ऑफ डार्कनेस, निक्टोफोबिया, एबनॉर्मल फियर ऑफ क्राउड, ऑक्लोफोबिया। बात करें एबनॉर्मल फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एबनॉर्मल फियर ऑफ ओपन स्पेस, एगोराफोबिया, क्रेज फॉर सेटिंग फायर टू थिंग्स, pyromania, excessive craving for alcohol, dipsomania, excessive obsession with stealing, kleptomania। अब साइंस एंड स्टडीज का देखते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनिमल इन देयर एनवायरनमेंट, ethology, study of the origin and history of words, etymology, study of coins and medals, numismatics, study of insect, entomology, study of birds, ornithology, study of the human mind and behavior, psychology, study of ancient inscriptions, एपिग्राफी। बात करें गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड वन वर्ड, तो गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, मोनार्की, गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय स्मॉल पीपल ऑफ small group of powerful people, oligarchy, government by a dictator, autocracy, government by religious leaders in God's name, theocracy, government by the military, statocracy, rules by the wealthy, plutocracy, state that has no government, anarchy, a government run by one party with absolute power, totalitarianism। बात करें किलिंग या होमिसाइड्स से रिलेटेड वन वर्ड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, होमिसाइड, killing of one's own brother, fratricide, killing of one's own sister, sorrowcide, killings of one's own father, patricide, killings of one's own mother, matricide, killing of a king, regicide, killing of an infant, infanticide, killing of oneself, suicide, killing of insects, insecticide, killing of a race or ethnic group, genocide। प्लेसेस एंड हैबिटेट्स की बात करें, सॉरी, place where monks and nuns live, monastery, a convent, a place where animals are kept for public display, zoo, a place where aircrafts are kept, hangar, a place where orphan are housed, orphanage, a place where bees are kept, apiary, a place where wine is made, winery, a place where fishes are kept, aquarium, a place where sick people are treated, hospital, a place where old people are cared for, geriatric home, underground place where dead bodies are buried, catacomb, character and traits related one word, one who cannot be corrected, incorrigible, one who cannot be bribed, venal, one who is fluent and persuasive in speech, eloquent, extremely careful about details, meticulous, one who talks too much, garrulous या loquacious, one who is always doubting, skeptic, one who is optimistic in all situation, optimist, one who tends to see the worst side of things, pessimist, one who is indifferent to pleasure or pain, stoic, feeling of doubt or lack of trust, cynicism। टाइम एंड ड्यूरेशन से रिलेटेड देखते हैं, हैपनिंग एवरी ईयर, एनुअल, हैपनिंग एवरी 2 ईयर, बायएनियल, हैपनिंग एवरी 100 years, सेंटेनियल, occurring every half year, biannual या semi annual, lasting for only a short time, ephemeral or transient, lasting forever, never dying, immortal or perennial,
something belonging to the past, archaic, obsolete, happening after death, posthumous, that which exists in the present time, contemporary, something that will happen in future, imminent या impending. बात करें लैंग्वेज एंड राइटिंग से रिलेटेड, a words or phrase pronounced exactly the same as another but with different meaning. Homophone, word opposite in meaning. Antonyms, word similar in meaning. Synonyms, a humorous misuse of word. Malapropism, a set of letters forming a word using letters of another word. Anagram, using many words when few would do. Verbosity, a pleonasm, a sentence using all letters of the alphabet. Pangram, a word spelled the same forward and backward. Palindrome, a short statement expressing a general truth. Aphorism, a proverb, a word that imitates a sound. Onomatopoeia. फ्रेंड्स, हमने ऑलमोस्ट सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए हैं जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।